Hello friends, welcome to Ecoholics YouTube channel. My name is Avinash and in this video I'll be discussing with you economics current affairs for 14th August 2024. So I've selected two articles from the Mint newspaper, and before I move ahead I want to answer a question that was asked in yesterday's lecture. So somebody left a comment in the comment section that why am I using the Mint newspaper? What is the reason? Well, friend, honestly, the idea is that I wanted a balanced commentary. I didn't want something which is too critical of the government. I didn't want something which is too, flattering for the government. I wanted something which is balanced, right? Where we can find articles pro government or pro establishment, which gives us a sense of what they are doing right, and they also have articles which are, let us say, critical of the government, which give us a sense of what can be done better going ahead, right? So both these things get balanced in the Mint newspaper. That is point number one. Point number two, when I started off, I thought that I will cover everything. I'll cover Business Standard, I'll cover Indian Express, I'll cover the Hindu, I'll cover this, I'll cover that. But then my experience over the years has taught me that आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो. ज्यादा से ज्यादा आप कुछ चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हो, या फिर आप सारी चीजें खराब कर सकते हो. दैट इज व्हाट यू कैन डू, राइट? सो व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल is a variety of topics being covered in a systematic manner in 20-25 minutes, nothing more than that, from one newspaper. So उससे क्या होता है, and what I'm doing is कि on a daily basis at least two questions I'm providing. I'm doing, let's say, around 25 lectures per month. Okay, so I'm providing you essentially at least 50 to 55 questions based on 50 to 55 important articles touching various different aspects of your syllabus: poverty, unemployment, industrialization, MSMEs, service sector, export, current account deficit, foreign exchange, right? uh, Policies. Okay, like for example आज जो हम बात करने वाले हैं. Okay, so the idea over here is that limited amount of work is what I want to do, but I want to make sure that that limited amount of work that we are doing is extremely relevant for you, is something which you can very easily attend, easily watch, and do some practice based on these two questions and keep moving in the forward direction. I am encouraging you to read Ecoholics ka magazine. I am encouraging you to make full utilization of all the resources that we provide. What I am making you do is a very systematic answer writing practice based on economics current affairs, which will do two things for you. एक तो आपको economics का current affairs समझ में आने लग जाएगा बहुत अच्छे से, and दूसरा आपकी practice start हो जाएगी. So this is where I am coming from. So thank you for asking the question, whoever asked in yesterday's lecture. If you have any questions, please feel free to ask all of you. I will always be happy to answer. Okay, moving ahead, दो आर्टिकल सिलेक्ट करें. पहला आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकल सिस्टम. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पहले एक दो बार हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात करी है. दैट इज जब हमने ये बात करी थी इंडिया के स्टैटिस्टिकल सिस्टम के बारे में, तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया था. तब ये था कि एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए. जैसे फॉर्मर स्टैटिस्टिशियंस, चीफ स्टैटिस्टिशियन TCA आनंद के हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, राइट? सो इस आर्टिकल के अंदर वी विल गेट द व्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू, राइट? एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट आर्टिकल which will give you 8 to 10 points which the government is wanting to take, or 8 or 10 steps which the government will take so that India का statistical system can be strengthened in the right direction. Second article is a very new article. It's a very fresh article. ठीक है? So India के अंदर obviously employment is a problem and we have to solve that problem. Okay, so how do you exactly solve that problem? Which kind of firms should you bet on? Should you try to make tiny firms, mid-sized firms, and mid-sized firms large firms? Should you focus on old firms or new firms? How can you identify dynamic firms? So ये बहुत अच्छा आर्टिकल है regarding employment. आप इसको जरूर सुनिएगा. Okay, so let us start with the first article. Okay, so पहले आर्टिकल में ये बताया गया दोस्तों कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे आर गोइंग टू टेक अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच. इंडिया का जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसको बहुत क्रिटिसाइज करा जा रहा है, राइट? काफी आउटडेटेड है, अनरिप्रेजेंटेटिव है. इनफॉर्मल सेक्टर को हम लोग कंप्लीटली कैप्चर नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन को हम लोग अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाते हैं,
एग्रीकल्चर का डेटा भी हम लोग टाइम टू टाइम बेसिस के ऊपर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज है हमारे स्टैटिस्टिकल सिस्टम के अंदर। तो जो प्लान ऑफ एक्शन है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि आप डेटा कलेक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं, यू आर इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग, यू आर इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ डेटा, and for all of these things you have to use advanced technology, you have to use artificial intelligence, with the ultimate objective being that speed, accuracy, as well as frequency of data collection and finally dissemination to the public। इन चारों चीजों के ऊपर हमारे को इम्प्रूवमेंट करवाना है। ओके, स्पीड, एक्यूरेसी, फ्रीक्वेंसी एंड डिसेमिनेशन। So one of the things that we will be doing is that we will be updating the base year। अब आप जानते हैं इंडिया के अंदर आज भी वी आर फॉलोइंग 2011-12 एज बेस ईयर, राइट। सो व्हाट इज बेस ईयर, थोड़ा सा एकेडमिक्स बता देता हूँ। तो बेस ईयर इज द ईयर इन विच जो भी आपके इंडेक्स की वैल्यू है उसको 100 मार्क सेट कर दिया जाता है, एंड एवरी सब्सिक्वेंट ईयर जो भी वैल्यू आती है तो उसको जो है कन्वर्ट करके इस 100 से कंपेयर करके वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द ग्रोथ रेट। लेट्स से दैट कि हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, सो लेट्स से दैट हमारा जीडीपी वाज 1 लाख करोड़ इन 2011-12, राइट। और उस 1 लाख करोड़ को हमने 100 सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वाले ईयर के अंदर लेट्स से कि हमारा जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इज लेट्स से 105,000 करोड़ और 1,05,000 करोड़, तो दैट्स अ क्लियर 5% का ग्रोथ। दैट 105,000 विल बी कन्वर्टेड इनटू लेट्स से इंडेक्स वैल्यू ऑफ 105 एंड 105 को हम 100 से कंपेयर कर देंगे, राइट। उसके बाद वाले साल के अंदर वी विल कन्वर्ट लेट्स से हमारा जीडीपी इज 1,12,000 करोड़, सो विल कन्वर्ट 1,12,000 करोड़ इनटू द इंडेक्स वैल्यू कीपिंग 1 लाख, यूनिटरी मेथड से हम कर देंगे और फिर उस इंडेक्स वैल्यू को पिछले साल की इंडेक्स वैल्यू यानी कि 105 से कंपेयर करके ग्रोथ रेट निकाल देंगे, राइट। सो बेस ईयर के अंदर व्हाट हैपेंस इज कि वी आइडेंटिफाई अ नॉर्मल ईयर एज बेस ईयर, ठीक है, जिसके अंदर सारे वैल्यूज वर इन द राइट डायरेक्शन, कोई अब नॉर्मेलिटी नहीं थी, कोई एनोमैली नहीं थी, स्पाइक नहीं आया हुआ था, कुछ अननेसेसरी का डिप्रेशन नहीं आया हुआ था। सो दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई बेस ईयर, एंड टिपिकली बेस ईयर हैव टू बी अपडेटेड एवरी 5 to 6 years। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया लास्ट 7-8 years से ज्यादा से हमने बेस ईयर को अपडेट नहीं करा है, राइट। सो द आइडिया ओवर हियर इज दैट वी वांट टू अपडेट द बेस ईयर for GDP, for CPI, for IIP, right? One of the advantages of updating the base year is that ki if you are updating the base year, so then your statistics are actually representative of the reality। representative of the reality का मतलब क्या? अब जैसे for example consumer price index का base year is 2011-12, but 2011-12 का consumption trend, consumption pattern, consumption characteristics were very different from 2024 का consumption pattern, trend and characteristics। So it doesn't make sense to use 2011-12 as a base year because बदलाव आ चुका है जमीन के ऊपर, right? And that will be reflected when you update the base year। Same goes for your GDP calculation। So when you update the base year, okay, then your measurements are actually representative of the reality। So these are the reasons why you need to update base year। So one of the most important things that you should highlight in your answers is that इंडिया के स्टैटिस्टिकल सिस्टम को हमेशा तरोताजा रखने के लिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बेस ईयर को अपडेट करना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वी विल ब्रिंग द बेस ईयर क्लोजर टू अस, राइट। दैट्स पॉइंट नंबर 1। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो कि डिस्कस करा जा रहा है वो ये है दैट वी डू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सिनारियो, उससे रिलेटेड नंबर्स आते हैं। सो एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग इट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, गोइंग अहेड वी प्लान टू डू इट ऑन अ मंथली बेसिस। Another very important development would be that we will be launching new surveys to capture data from informal sector। तो आपको यहाँ पर से दो चीजें समझ में आ जानी चाहिए। पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए कि सर्वे की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ एग्जिस्टिंग, और जिस एरिया में सर्वे नहीं है वहां पे सर्वे लाओ। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जब लाया गया था दैट वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब उस सर्वे का हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, राइट। गोइंग अहेड हम उस सर्वे के जो डेटा है उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाएंगे, उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस को बढ़ाएंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएंगे। सो यू कैन सी दैट दिस रिफॉर्म इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो यही चीज आपको अपने आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट करनी है। प्लीज डोंट बी टू क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। इतने बड़े कंट्री का डेटा कलेक्ट करना कोई खाने का काम नहीं है, राइट। बट एट द सेम टाइम डू एक्सपेक्ट पॉजिटिव चेंजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय पॉइंटिंग थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है।
सो हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर का सर्वे ही नहीं है, तो सर्वे लेकर हम आना चाहते हैं, स्पेशली सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के नंबर्स को हम कैप्चर करना चाहते हैं। एक और चीज यहाँ पर ये है कि राइट नाउ वी आर यूजिंग अ पेपर बेस्ड मेथड। अब हम मेथड चेंज करना चाहते हैं, हम टैबलेट बेस्ड मेथड्स लेकर आना चाहते हैं, सो दैट द डेटा गैदरिंग एंड डेटा रिपोर्टिंग के बीच में जो टैट है, जो टाइम है, उसको हम कम कर सके। बिकॉज इफ यू आर डूइंग अ टैबलेट बेस्ड गैदरिंग, then data can be centralized almost on a real time basis. So as the data is getting centralized on a real time basis, as it is getting purged of, let us say, anomalies and abnormality, etc., etc., so immediately you can start getting a real time picture of what is happening on the ground. Okay, so this will also be from a statistical standpoint, this will also be a step in the right direction. We want to collaborate with the private sector and academia, ताकि डेटा की एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क्स ना रहे, ताकि जो डोमेन एक्सपर्टीज है हमारे एकेडमी के अंदर और जो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी है, प्राइवेट सेक्टर की एबिलिटी टू गेट द जॉब डन ऑन टाइम है, उसको हम लोग यूज करके, लिवरेज करके जो है आगे बढ़ सके। ओके, एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है जो कि मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है। सो इन सम स्टेट्स दे हैव डिजिटाइज्ड फार्मर्स लैंड मैप्स, दे हैव गिवन geographic information system और GIS enabled mobile phones to field staff। तो मोबाइल फोन क्या करता है कि जो फार्मर के लैंड है उस पर जाता है, तो GIS के माध्यम से मालूम पड़ जाता है कि कौन से लैंड के नजदीक जाके फोटो निकाली जा रही है, फिर वो फोटो निकालते हैं एंड देन बेस्ड ऑन दैट अ वेरी प्रिसाइज क्रॉप एस्टिमेशन इज डन, प्रॉब्ली लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फोटो से ही हम एनालाइज कर देते हैं कि उस फील्ड के ऊपर हम क्या प्रकार का यील्ड एंड क्या प्रकार का आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच, राइट, टू एस्टिमेट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एक्यूरेटली। तो ये पैन इंडिया हमारे को जो है इस प्रकार के अप्रोच को लेकर जाना है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड टेक थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन, राइट। उसके अलावा वी नीड टू कंडक्ट द पॉपुलेशन सेंसस, इट्स हाई टाइम कि वो करा जाए। टीसीए अनंत का जो आर्टिकल हमने पहले डिस्कस करा था, उस आर्टिकल में ये चीज को मेंशन करा गया था that a lot of data is now being generated in India because of e-governance programs, right? A lot of data is there in the GST ecosystem. तो ये e-governance programs, ये GST ecosystem के डेटा को जो है अवेलेबल करवाना चाहिए टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इकोनॉमिक्स, ताकि वो लोग इस डेटा को स्टडी करके इसके अंदर से इंसाइट्स को जो है ग्लीन करके हमारे पॉलिसी मेकिंग को इन्फॉर्म करने के अंदर मदद कर सके, राइट। सो देयर इज नो पॉइंट of having data and not sharing it with others. If you want robust statistical system, so the important raw material for that is good data, accurate data, reliable data, real time data, right? Apart from that, we are also launching first of its kind annual survey of service sector enterprises, right? So this is also going to be a step in the right direction. Why is all this so important, right? ये article important क्यों है? ये article important है because Arvind Subramanian, this is just one reason, but Arvind Subramanian, right? इन्होंने 2019 के अंदर एक पेपर लिखा था, उनमें उन्होंने कहा था कि there is significant overestimation of India's economic growth between 2011 and 2017 because of methodology changes. And when this article was written, right, so obviously it raised a lot of questions on India's statistical system. So India का statistical system के अंदर बहुत सारे questions उठाए जाने लग रहे हैं in the recent past, right, especially the credit worthiness of it, and therefore we need to take steps in the right direction. Government does realize this. That's why in Union Budget 24-25, Nirmala Sitharaman emphasized that enhancing data governance and improving the process of data collection, processing and management, they are a part of next generation reforms and strategic policies for India. So whenever you are writing about our statistical system and the associated reforms, okay, do mention this part over here, that the government is cognizant of what needs to be done, and do mention the kind of steps that we have discussed above. So the new surveys that we are launching, right, the new methods that we are launching, the new partnerships that we are launching, additional steps that we are taking, right? So in a very systematic manner, try to club your points together based on the above discussion and try to make it a part of your answers. Okay, so I hope that this has made sense for all of you. Moving ahead to my next article. Now this is a very beautiful article. It's very new, very fresh, right? So this author is saying that company dynamism is what we must rely on for job creation. What do I mean by company dynamism, right? तो सरकार क्या करती है कि बोलती है कि स्मॉल सेक्टर को हम सपोर्ट करेंगे, राइट, माइक्रो एंटरप्राइजेस को हम सपोर्ट करेंगे, राइट,
बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्मॉल फर्म्स है, माइक्रो फर्म्स है, इनमें से कई फर्म्स 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स अगो बनाई गई फर्म्स है, जो कि 10 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स तक स्मॉल या माइक्रो रह गई है. क्या ये फर्म्स रियल में ग्रो कर सकती है? Right? Is this the right approach? Or should we focus on young firms which are dynamic, which are innovative, which are doing value addition, right? And in firms को prioritize करना चाहिए, इनकी growth करवानी चाहिए. What should be the right approach? Should we focus on old small firms or should we focus on new dynamic firms? This is the discussion that is happening in this article. I'm sure आपको समझ में आ रहा है कि where am I going with this, right? Please keep this in mind. Another thing that I want you to focus upon is this particular infographic. मैं थोड़ा सा zoom in कर देता हूँ for everybody's ease over here, right? So World Development Report के अंदर एक research publish करी गई है by Charles Gottlieb, Marcus Poschke, and Michael Tuting. Okay, so what these guys are saying is that countries can be at a low income stage, lower middle income stage, upper middle income stage, and high income stage. Right. So if you see low income state के अंदर, let's say 15% of your population is in large firms, that increases to 19%, increases to 40%, it increases to 51%. Right. Look at small firms. Small firms के अंदर at low income stage 60% of your workforce is working in small firms. That reduces to 52, that reduces further to 32, that reduces to 16. Okay, तो यहाँ पर medium firms के अंदर कोई change नहीं आ रहा है, right? यानी कि India is right now at this stage. इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम स्टेज पे जा चुका है और इंडिया को अपर मिडिल इनकम स्टेज पे पहुंचना है, राइट? So what we have to do is that we have to subtract the number of people in the small firms, right? And we have to add the number of people in the large firms. So this is India's challenge, that we need to pull people out of small firms and take them into large firms. वो तब होगा जब large firms create होंगी, वो तब होगा जब वो प्रकार के अच्छे फर्म्स को जो है सपोर्ट करा जाएगा, डायनामिक फर्म्स को जो है सपोर्ट करा जाएगा, राइट? नाउ सी दिस आर्टिकल स्टार्ट्स इन अ वेरी ऐसे काइंड ऑफ अ वे, जैसे आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, राइट? कि मुंबई के अंदर जो है 1,10,000 औरतें कैंप के अंदर आई, मुंबई यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऊपर आकर उन्होंने पुलिस भर्ती का जो एक्सरसाइज है वो करना स्टार्ट करा, राइट? केवल 1257 भर्तियां थी, उसके लिए हमारे पास 1,10,000 औरतें जो है उसके लिए women जो है पार्टिसिपेट करने आई, राइट? दिस इज हाउ यू टिपिकली स्टार्ट एन essay, by a small snippet of the reality. This is a small snippet of the reality, right? That 110,000 women appeared for 1257 posts ka selection process. Okay, so we see this happen in India multiple times across the country, that people are rushing for government job applications. 2-3 reasons are there. Number one, you get good wages. For example, if you actually start as a police constable, you start with a salary of 30,000 rupees per month, which is quite good. You don't get that kind of salary very easily in other jobs as a starting salary. Secondly, agar aapne government mein job grab kar liya, so then that's a stable employment. You will not be easily fired, you will not be easily removed, right? Of course there will be various issues in your job, but they are there in other jobs as well, but at least there will be some stability. So these are the pull factors. Push factor is that we are not having, or we are not creating quality jobs in the private sector, right? So as a result of which people do turn to public sector jobs, right? So despite the fact that Indian economy has been growing quite well, we are very proud of ourselves when we say that India is one of the fastest growing major economies or large economies, etc. But the reality is that we haven't been creating as many jobs as we should be creating, right? Politics has also has gotten involved in this entire issue now. So state governments, they have been promising that they will increase the number of people they will hire, right? State governments such as Karnataka most recently and other states earlier, so they are doing these stunts where they are trying to reserve local jobs for locals, right? So these are the kind of steps that are becoming popular nowadays. Okay, central government, they have started 3-4 schemes to support employment creation in the country, right? So steps are being taken, right? Now let us see what should be done as per the author, as per the research done in the World Development Report, right? Now the author is saying, and this is very relevant in my opinion, that job creation is a problem. Why?
because your firms are not dynamic enough, because your firms are not growing fast enough, right? So there is this report, World Development Report. It's an annual publication by World Bank. So इसमें लोग they are talking about middle income trap. So what is middle income trap, right? कि जो countries है जो upper middle income stage पे आ जाती है, वो high income stage पे कभी जा ही नहीं पाती, बिकॉज अपर मिडिल इनकम स्टेज तक तो वो ग्रो करते हुए फास्ट ग्रो करते हुए आ जाते हैं, जैसे चाइना आ गया है. बट व्हेन इट कम्स टू क्रॉसिंग फ्रॉम अपर मिडिल इनकम टू हाई इनकम स्टेट, एंड फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन योर ग्रोथ रेट, फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन योर डायनामिज्म, वो नहीं हो पाता है, राइट? वो नहीं हो पाता है. सो यू गेट स्टक इन दिस अपर मिडिल इनकम स्टेटस. एक्सेप्शन इज साउथ कोरिया. साउथ कोरिया इज अ हाई इनकम कंट्री, राइट? So उसकी growth rate के अंदर कमी नहीं आई, despite the fact that they became upper middle income, they kept growing and they are now in a high income bracket. Okay, China is an upper middle income country. They need to beat the middle income trap. They need to continue growing, and as you know that China is slowing down. ठीक है, reports after report are suggesting that Chinese economy के अंदर अब drag आने लग गया है, अब slow down आने लग गया है. So will China be falling in the middle income trap? Honestly, I don't think so. But China has to escape the middle income trap. 10 साल बाद India will have to escape middle income trap. आज हमारे लिए middle income trap relevant नहीं है, because we are in low middle income category. So low से upper में तो हम लोग चले जाएंगे अगले 10-12 सालों में. That is not going to be a problem, right? But upper middle income से high income के अंदर जाने के अंदर we will face a lot of challenge. और उसके अंदर we have to focus upon this. So like I explained to you, right, that India, we will be upper middle income country by the early years of the next decade, right? तो तब जो है हमारे को what we will have to do for that is that we will have to bring this transition. Like I said कि we are here today, we are in the low middle income, we will be in the upper middle income. तो उस transition के लिए we need to make big firms a reality. We have to encourage firms to become bigger in size, right, in terms of number of employees that they are hiring. So going ahead, what is going to happen in India in the next 10 years is that there will be a dramatic fall in the share of workers in small firms. There will be a matching increase in the share of workers in large firms, right? As of now India के अंदर we are standing on the opposite end of the pole. India के अंदर employment structure is heavily dependent on tiny enterprises. लोग छोटे छोटे एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं. There are 6.5 lakh MSMEs, out of which 90% are micro enterprises, right? There are a huge number of people working in these micro enterprises either as self-employed, right? So that's where the problem is. India के अंदर आज के दिन जो ये tiny enterprises, micro enterprises, small enterprises होती हैं, right? They are more like distress entrepreneurship, कि आपको कोई नौकरी नहीं मिली तो आपने जो है चाय की दुकान लगा ली या समथिंग लाइक दैट, या पंक्चर रिपेयर करने का काम स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज डिस्ट्रेस एंटरप्रेन्योरशिप. इफ यू गेट अ गुड जॉब यू विल गो इनटू दैट गुड जॉब, बट यू डोंट हैव इट, सो यू आर डूइंग व्हाटएवर यू कैन डू. ओके, सो वी नीड डायनामिक फर्म्स. सो व्हाट मैटर्स इज नॉट स्मॉल साइज ऑफ द फर्म. स्मॉल फर्म्स के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए फर्म्स की एबिलिटी टू ग्रो के ऊपर. सो अगर सरकार पैसा खर्ची कर रही है तो सरकार को स्मॉल फर्म्स, टाइनी फर्म्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस को हेल्प करने से अच्छा ये होगा, ऑथर इज सेइंग, कि उन फर्म्स को हेल्प करो आइडेंटिफाई करने के बाद जिनके अंदर वैल्यू एडिशन करने की क्षमता है, जो डायनामिक फर्म्स है. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च जो कहती है कि यूएस के अंदर अगर कोई फर्म 40 इयर्स तक सर्वाइव करती है तो वो फर्म का साइज विल बी ग्रोइंग बाय अ फैक्टर ऑफ 7. यानी कि अगर इट स्टार्टेड लेट्स से विद अ हाइपोथेटिकल वैल्यूएशन और टर्नओवर, आई डोंट नो, समथिंग ऑफ लेट्स से 10 lakhs, तो 40 इयर्स डाउन द लाइन जो है उसका रेवेन्यू काफी ज्यादा हो चुका होगा, उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काफी ज्यादा हो चुके हैं, एंड सो ऑन, फैक्टर ऑफ 7, राइट? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर दिस फैक्टर ऑफ ग्रोथ इज लेस देन 3. इंडिया के अंदर ऐसा पाया गया है कि टाइनी एंटरप्राइजेस ग्रो ही नहीं करते हैं, वो छोटे ही रह जाते हैं, 40 साल बाद भी वो छोटे ही रह जाते हैं, राइट? So the idea over here is that there is stagnancy over an extended life cycle in a lot of firms in India is what the research is saying. ठीक है? So like I explained to you that since you are having unemployment as a problem, so you are resorting to entrepreneurship. So it's distress entrepreneurship. It's the last resort against personal employment जो कि इंडिया के अंदर होने लग रहा है, right? So यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी दी गई है, राइट, बाय मनीष सबरवाल. मनीष सबरवाल इज द हेड ऑफ टीम लीज सर्विसेज. ओके, ये लोग हायरिंग वगैरह करवाते हैं, ठीक है? सो द आइडिया इज दैट यंग फर्म्स के ऊपर ध्यान दो, राइट?
विच कैन एक्चुअली क्रिएट जॉब क्रिएशन, ठीक है। फोकस ऑन इन्फेंट फॉर्म्स, जो कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर सपोर्ट उन्हें दिया जाएगा तो वो ग्रो करेंगे, सो फोकस ऑन देम रादर देन फोकसिंग ऑन फॉर्म्स विच आर ड्वार्फ्स, बिकॉज वो ग्रो कर ही नहीं सकते, बिकॉज अब उनकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। सो दैट्स व्हाट द आइडिया इज, दैट स्टॉप फोकसिंग ऑन टाइनी एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्टार्ट फोकसिंग ऑन यंग एंड डायनामिक फॉर्म्स, जो कि आपको जॉब्स क्रिएट करके दे सकते हैं, वैल्यू एडिशन क्रिएट करके दे सकते हैं, राइट। सो द आइडिया इज दैट कि एज ऑफ नाउ इंडिया की जो अभी तक की प्रोग्रेस है उसके अंदर कोई टेंशन नहीं। हमने लो इनकम स्टेटस से निकलकर लोअर मिडिल इनकम स्टेटस में एंट्री मार ली है और हमारे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ है, एंड दैट इज ओके, दैट इज पॉसिबल। बट अब इसके आगे का जो ट्रांजिशन है, दैट कैन हैपन ओनली व्हेन द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज अ मेजर ट्रांजिशन, दैट वी स्टार्ट रीएलोकेटिंग लेबर ऑन अ लार्ज स्केल, राइट। एंड उसके लिए हमारे को फोकस करना चाहिए यंग एंड डायनामिक फॉर्म्स के अंदर, राइट, जो ग्रो करना चाहती है, जो ग्रो कर सकती है। दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज सेइंग। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल, आई वुड से, राइट। काफी अच्छा आर्टिकल है। We have come from low to lower middle income. Now the transition going ahead is not going to be that easy. So let's focus on both these articles today. Try to do answer writing, analyze the current employment challenges in India as highlighted by recent rush for government jobs and World Bank's report on avoiding middle income trap. How can addressing these challenges improve job creation and economic growth? Okay. So attempt both these questions today. Tomorrow is Independence Day. We will have a lecture tomorrow as well. Please try to attend that lecture or watch it offline after the flag hoisting ceremony. With this, we'll bring this session to an end. Thank you so much. All the very best and Jai Hind to all of you. Thank you.